Hello everyone. Let's start with India's leadership role in WTO negotiation. So India's journey through the WTO negotiation balances national priorities while maintaining solidarity with global south. So first India's early approach. So even though India was a founding member of WTO, which was born in 1995, India approached it with deep caution because India came out of decades of inward looking economic policies, and for it, a rapid uh, tide of globalization, rapid pace of globalization was suspicious. And जिनको background पता नहीं है, so it was after the balance of payment crisis in 1991 that India approached Bretton Woods institutions such as IMF for assistance. So IMF ने फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दिया बट साथ में कंडीशंस भी दी जिनको हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. और बीओपी 1991 के पहले का बैकग्राउंड, इंडिया वाज एन इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी. Inward looking means India was a protectionist economy, a closed economy, while in short, the Indian state, it protected the domestic producers. और वो कैसे? That India imposed tariff and various taxes on imports from other countries. So उसकी वजह से जो imports हैं that became expensive, और imports expensive होने की वजह से जो domestic producers हैं they can sell their produce in domestic economy. So इस तरह से India, the whole thing, it was protectionist. And जब balance of payment crisis हुई, that then the IMF with its condition wanted India to open itself up for the global world. Then initially India feared loss of political autonomy. So binding WTO commitment, they could restrict India's sovereign right to support domestic industries, agriculture, and vulnerable population. क्योंकि इंडिया के लिए where a large part of its population was engaged in agriculture, and its technological background, technological platform, it was not established, it was not developed enough. So ऐसे में India needed to support its domestic industries, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को. बट यहाँ पे जो बाइंडिंग कमिटमेंट होते हैं डब्ल्यूटीओ के, इंडिया फियर दैट दोज कमिटमेंट दे कैन रेस्ट्रिक्ट India's welfare policies or in India's sovereign right. So the first suspicion was on loss of political policy autonomy, political autonomy. The second suspicion was for uneven playing field because the developed country, they had historical advantages क्योंकि यही डेवलप कंट्री है. दे फॉर्म द कॉलोनियल बैकबोन ऑफ इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियल बैकबोन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. उनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू पहले से ही टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस थे. दे वर ऑलरेडी ट्रेडिंग हाई, वॉकिंग हाई इन दिस टेक्नोलॉजिकल वैगन. और ऐसे में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं लाइक इंडिया और द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, उनके पास ये टेक्नोलॉजिकल एज था नहीं. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी was still in infancy. So ऐसे में looking at the historical advantages that the developed country had, India feared that this liberalization, it would reinforce global inequalities rather than bridge them. क्योंकि ऐसे में the bandwagoning, wherein it's like playing a game where who is more technological, या who is more tech savvy, who is going to mass produce, who is going to have more factories. और ऐसे में जो न्यूली डेवलप, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, वो पहले ही दे आर ट्रेलिंग फार बिहाइंड. सो ऐसे में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो है ही नहीं. और उसका अल्टीमेट एंड तो एक ही है फिर कि दे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज और द डेवलपिंग कंट्रीज, दे हैड टू rely on imports from the developed countries. So in short, developing countries, they can do nothing, but they had to toil day and night so that their hard-earned money can reach in the pockets of developed countries. This fear was not unfounded that such technological
imbalance, it can reinforce the global inequalities. But despite these reservations, the pressure of economic liberalization post 1991 and the realities of an increasingly interconnected world pushed India towards a more proactive stance. Because that was the necessity and that was the pragmatic approach. कि we cannot sit on bank all the time. Sometimes we have to take the chance and dive deeper. Then the turning point came during the Seattle Ministerial Conference in 1999. So India here vocally opposed the launch of a new rounds of negotiation without first fulfilling promise made to developing countries under the Uruguay round. Let's have a look at both Seattle Ministerial and Uruguay round. So Uruguay round, ये they went from 1986 to 94 and that they led to creation of WTO. और इसमें जो newly expanded areas हैं वो like trade in services, intellectual property rights हैं and Uruguay round में जो promises जो हुए थे that the developing countries they would be given market access of developed countries. रिच नेशन ग्लोबल नॉर्थ के रिच नेशंस का मार्केट एक्सेस मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज को और साथ में एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो हैं उनको भी रिड्यूस करने की बात की गई थी. सो दीज वर द प्रोमिसेस दैट वर मेड इन उरुग्वे राउंड. लेकिन ये प्रोमिसेस दे वर नॉट फुलफिल्ड और उसके बाद न्यू द थर्ड राउंड ऑफ WTO negotiation was started known by the name Seattle Ministerial और then India opposed it कि पहले ये प्रॉमिस पूरे करो, पहले मार्केट एक्सेस दो, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज प्रोवाइड करो. एंड Seattle Ministerial it started with a new round known as the Millennium Round. अब Millennium Round में the key things, the key points that included were agriculture, labor, environmental standard, फिर कंपटीशन पॉलिसीज को लेकर भी कुछ इश्यूज थे. सो इन ये सब जो इश्यूज हैं environmental and labor standards को भी कुछ issues थे. So India opposed all these issues, all these points of negotiation. And not only India, but there were widespread protests against globalization all over the world. And Seattle Ministerial became a thing of national assertion. Then the second turning point was during the Doha development round, where India supported a development-centered trade agenda that sought to align global trade more closely with poverty eradication and capacity building. So ये point जो है इसमें भी इंडिया का जो है एक flexible and proactive stance दिखाई दिया. So in summary, from a reluctant participant that was wary of entrapment, wary of getting trapped, India grew into an assertive negotiator, learning to use the multilateral platform to both shield national interest and push systemic reforms in form of equality. Now the second thing, the battle over agriculture, food security versus market liberalization. So agriculture is the most politically sensitive factors for India in WTO negotiation. ना सिर्फ इंडिया के लिए, but agriculture is the most hotbed, most controversial topic in whole WTO negotiation, all rounds of WTO negotiation. So India's agricultural reality. So ये जो UPSC के students हैं वो सब जानते हैं that over 85% of India's farmers are small and marginal. And then agriculture support 42% of the workforce, but it contributes only around 18% to GDP. यानी जितने भी workforce है, the capable hands, उनमें से 42%, almost half of the people, they are engaged in agriculture. So it means agriculture is the mainstay. इतने सारे लोगों का, आधे working people का जो main livelihood है वो agriculture पे dependent है. So this issue cannot be taken lightly. Then the food security imperatives. So programs like National Food Security Act that guarantees subsidized food to nearly two-thirds of India's population. So ऐसे में भी agriculture, the veins of agriculture should be in the hands of state. It is about agriculture and political sovereignty. So against this backdrop,
WTO disciplines on subsidies and tariff have imposed critical threat. कैसे? First, subsidy caps. So under the rules of WTO, domestic support, that is amber box subsidies, they must be kept within 10% of the value of production. So in short, there are various kind of subsidies that are permissible under WTO rule or WTO commitment. Now, WTO provides amber box subsidies for domestic support, which in other terms mean कि India, it can give subsidy in the tune of 10% of the value of production. जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जो प्रोड्यूस हुई है कंट्री में, इंडिया सिर्फ उसका 10%, उसके 10% पे ही सब्सिडी दे सकती है. सो इज़ विच इज़ नॉट फीजिबल इन इंडियन कंटेक्स्ट. जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, 42% वर्क फोर्स जो है it is employed in agriculture, and then two-third of India's population in dependent on subsidized food. ऐसे में सिर्फ 10% subsidy is not feasible at all. So India has increasingly breached this limit. So India seeks a way out of this program. Fair second issue is about market access pressure. So pressure to lower import tariff that could flood the domestic market with cheap foreign agriculture goods, devastating livelihood. Because एग्रीकल्चर दूसरे मैन्युफैक्चर गुड्स हो तो कोई नहीं. अब एग्रीकल्चर गुड्स हैं उसके लिए भी इंडिया इज प्रेशराइज टू लोअर टैरिफ, लोअर इम्पोर्ट टैरिफ. सो उससे क्या होगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे मास एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे स्टेट सब्सिडीज जो है दे आर इन ट्यून ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और ऐसे में उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है. फिर वहाँ के जो किसान हैं जनरली बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, लार्ज पूल लैंड, और एग्रीकल्चर इज होली कमर्शियलाइज. उनके पास टेक्नोलॉजिकल एज है, उनके पास फाइनेंशियल एंड स्टेट एंड क्या बोल सकते हैं टेक्निकल एज है. ऐसे में उनका इनपुट कॉस्ट अगर कम हुआ तो उनका जो प्रोडक्ट है इट बिकम्स ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट. पर अगर उनका प्रोडक्ट अगर इंडिया में आएगा तो जो इंडिया की जो वर्क फोर्स है, 42% पॉपुलेशन दैट इज एंगेज इन एग्रीकल्चर, वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो माल भी तो बेचना है. अगर सब्सिडी नहीं दी जाए, अगर यहाँ पे ये इंपोर्ट को नहीं रोका जाए तो फिर ये लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे. तो यानी इनका जो लाइवलीहुड है इट वुड कम अंडर थ्रेट. सो ऐसे में इंडिया नीड्स टू tariff impose tariff on incoming imports. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है दे कीप प्रेशरिंग इंडिया टू लोअर इम्पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया इवन इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया इज अ लार्ज मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, 1 बिलियन कंज्यूमर्स. ऐसे में कोई भी एक चीज़ है उस पर अगर ₹1 का भी प्रॉफिट होता है, सो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर कमोडिटीज, क्योंकि दे आर द बेसिक, दे आर द स्टेपल, है ना. आज हम फ़ोन के बिना रह सकते हैं, लैपटॉप के बिना रह सकते हैं, एजुकेशन के बिना रह सकते हैं, बट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बिना नहीं रह सकते. सो यानी अगर एक कमोडिटी पे ₹1 का भी अगर प्रॉफिट होता है, देन दिस वुड ट्रांसलेट इनटू 1 बिलियन in simple terms. For any basic commodities in any simplest and hypothetical situation, 1 billion rupees is the profit. That is the starting profit. So that's why Indian market is so lucrative. Then India's strategic moves. So first, public stock holding. So India spearheaded the demand that food security programs should be protected, leading to a peace clause at Bali that ensured that no legal challenge would be there to India's food procurement till a final solution is found. Because here, India joined this food security thing with humanitarian aid, because a large part of population it is dependent on agriculture subsidies, it is dependent on food, subsidized food. ऐसे में अगर this public stock holding is there, this stock holding is not for speculative purpose, जैसा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो समझती है.
that this is not speculation, this is on humanitarian ground. This is the condition that the Indian state, it has been provided by, it has been given by the constitution. Welfare is the cornerstone of Indian state. So ऐसे में अगर Indian state it stocks such agriculture goods for subsidized provisions, that thing is the necessity for Indian state rather than the market speculation. Fair second move is about spatial safeguard mechanism. So here India pushed for the right to temporarily raise tariff in case of import surge that threaten rural farmers. So यहाँ पे again जो second breakthrough है, जो second victory है इंडिया के लिए, that India got the right that if import surges, and especially for agriculture goods, then India can temporarily raise import tariffs so that such incoming surges, such incoming imports, they become expensive, और उससे जो rural farmers, especially the poor, small and marginal farmers, they can be protected by such flood of cheap goods. So in दोनों cases में India worked on welfare, strategic and humanitarian grounds. So here India framed agriculture not as a narrow commercial issue, but as a humanitarian, developmental and livelihood concern, and that's why India got a lease of life in peace clause at Bali. So इससे जो food security program है, it would not be legally challenged in WTO negotiation. फिर safeguard mechanism से जो import surge है, especially flood of cheap goods, ये भी इसके लिए भी India can raise tariff. Both of them, they challenge the commercialized lens of developed countries. So India's stand gained resonance across the global south क्योंकि जो बेसिक स्टोरी है ग्लोबल साउथ कंट्रीज में वो सब सेम है. सबके जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन है, कलोनियलिज्म है, एंड दे ओन वर्ल्ड व्यू टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलप्ड कंट्रीज, सब सिमिलर है. सो हियर इंडिया का जो स्टैंड है, इट फाउंड reception across the countries of global south, creating broad alliances with African and Asian nations that share similar food security concern. Now the third principle, intellectual property rights and access to technology. So the WTO's TRIPS agreement that brought intellectual property firmly into trade regime with profound consequences for health, agriculture and technological access in developing countries. So TRIPS, जो इन लोगों को नहीं समझ में आता, तो बेसिक चीज़ यही है. TRIPS is about intellectual property. And intellectual property like any creation of scientific, artistic और टेक्निकल. सो अगर आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है, कोई म्यूज़िक बनाया है, कोई मूवी बनाई है, कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन है, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ है आपकी, if that thing is unique, then that property, that becomes a property, and that property, that intellectual property should be protected. So जो copyright होते हैं, patents होते हैं, they are the manifestation of intellectual property. So this TRIPS agreement, इसके ज़रिए ये जितनी भी intellectual properties हैं, they were protected. फिर उसकी वजह से बहुत सारे issues create हुए जो अभी देखते हैं. First such issue is about medicine. So regarding the medicine issue, the stakes for India were high क्योंकि the India's generic pharmaceutical industry, also known as the pharmacy of the world, and especially for the global south, it was at risk from stringent patent protection. अब यहाँ पे issue ये है, like कोई भी medicine बनी, अब जिसने भी ये medicine बनाई है, the producer, ये जो डिज़ाइन है, जो प्रोडक्ट है, that is the personal property, is the product of this producer, the property, intellectual property of the producer. And now सबको पता है कि अगर किसी ने मेहनत करके, अपना दिमाग लगा के, अपनी जी जान सब लगा के ये चीज़ बनाई है, and that thing is commendable, and it is also
intellectual property, then it should be protected, no doubt. लेकिन for how long such a thing should be protected, और क्या उसमें ये protection जो है it is only a commercialized issue? क्योंकि अगर ये किसी मोटरसाइकिल को लेकर है, किसी इंजन मॉडिफिकेशंस को लेकर है, कोई नए टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज को लेकर है, तो फिर ठीक है ना, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बहुत कम होता है. बट मेडिसिन, ये तो आप समझ सकते हैं कि मेडिसिन डज कम अंडर ह्यूमैनिटेरियन लेंस. स्पेशली कोविड-19 में आपने देखा होगा कि सच पैंडमिक दे नीड रेडी एक्सेस फॉर सच मेडिसिन. लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की वजह से लोगों को अगर ये ज़रूरी मेडिसिन ना मिल पाए, फिर सो इट इज़ अबाउट प्रोटेक्शन दैट शुड बी एक्सटेंडेड अक्रॉस दिस टाइम. अब अगर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है, वो कहता है कि मुझे 10 साल तक इस पेटेंट की रॉयल्टी चाहिए. अब 10 साल तक उसको रॉयल्टी मिलेगी, तो यानी 10 साल तक गरीब लोगों को वो मेडिसिन नहीं मिल सकती. एंड इंडिया इट प्रोड्यूसेस सच जेनेरिक मेडिसिन. जेनेरिक मेडिसिन मतलब होता है कि इनका पेटेंट नहीं होता. नाउ दीज मेडिसिन, जो फॉर्मूला है वो पता चल जाता है, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन टाइम एनी पेटेंट इट एक्सपायर्स. और मेडिसिन वगैरह जो है उनका पेटेंट तो एक्सपायर एंड इट बिकम एक्सेसिबल फॉर ऑल पीपल. सो जो फॉर्मूला है ये इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास आ गया. देन इंडिया कैन प्रोड्यूस अफोर्डेबल मेडिसिन दैट कैन रीच द पुअर एंड नीडी. और ये तो हम जानते हैं कि भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जिनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर स्पेशली रिगार्डिंग मेडिकल इश्यूज इट इज़ वेरी हाई. एंड इंडिया जैसी पुअर कंट्री के लिए, है ना, ये दिस बिकम्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. सो ऐसे में जो स्ट्रिक्ट patent protection that they should be avoided. So here India stood for lenient patent protection. Then the point of second stake was traditional knowledge protection. So here India feared the biopiracy of indigenous knowledge, biodiversity and agricultural practices. They can be commercialized against the very people who made them. So indigenous knowledge आप जानते हैं, like you might have heard about various bamboo thing, bamboo production, especially in tropical areas where rainfall is high. So northeast के अंदर most of the things, most of the food products, most of the artistry, it is done by employing bamboo. अब ऐसे ही बहुत सारे नॉलेज लाइक हीलिंग सिस्टम्स जो हैं वो भी बहुत सारे जो हैं वो इंडिजिनस, दे वर्क लॉट बेटर देन एलोपैथिक मेडिसिन. सो यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, इंडिजिनस नॉलेज है, इफ़ इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, देन द इश्यू ऑफ बायोपायरेसी कि यही इंडिजिनस नॉलेज जो है ये कमर्शलाइज जो इंडस्ट्री है दे विल यूज़ दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है नहीं. सो फिर इसी चीज़ की बायोपायरेसी होगी. फिर द थर्ड इशू वाज टेक्नोलॉजी diffusion. So restrictive IP regimes, they could prevent access to critical technology that needed for industrialization and digital transformation. So again, यहाँ पे जो modernity है, modernity via the Western lens, because the horse of technological progress, it is already been driven by the Western nations. So हमें जो modernity है या westernity है या फिर progress के लिए जो चीज़ चाहिए, the manufactured tools, the intermediate tools, the finished goods, जो भी critical technologies हैं, यहाँ पे वही सेम इशू है जो मेडिसिन का है, restrictive IP regimes. अगर पेटेंट्स इतना है, इतना ज़्यादा है कि बहुत लंबे टाइम तक that technology could not become available to the people of global south, such critical technologies जितने भी कह सकते हैं, लाइक क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं, क्रिटिकल एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, स्ट्रेटजिक थिंग्स हो सकती है, और द टूल्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं. सो वो सब जो चीज़ें हैं वो आजकल में चाहिए. अब
जो restrictions होते हैं IP regime से they stay longer than expected. So ऐसे 8-10 साल बाद अगर वो चीज़ मिलेगी, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, तो उतना वेट कैसे कर सकता है? एंड पुअर कंट्रीज़ में जो R&D है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो बजट है, वो ऑलरेडी कम होता है, वे एफिशिएंसीज भी कम होती है, रिसर्च वर्क जो है, या कह सकते हैं जो ओवरऑल नॉर्मेलिटी रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी कम है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इट कैन बी borrowed, especially if critical technologies can be transferred. So India, it favored that such restriction should be lowered down. Now, India's negotiating strategy. First, domestic legislation. So India amended its Patent Act in 2005 to conform to TRIPS but inserted critical safeguards. So it inserted section 3D that prevented evergreening, which means the minor tweaks to existing drugs to renew patent protection. So यहाँ पे ये भी होता है evergreening, that is the issue, कि सेम फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है, उसने जैसे कोई पैरासीटामोल बनाई है, पैरासीटामोल विद सम न्यू कॉम्बिनेशन, अब इसका पेटेंट मिला 10 साल के लिए, फिर जब ये जेनरिक हो गई, अगेन उसने सेम पैरासीटामोल उसके साथ कोई एक नया कॉम्बिनेशन और माइनर ट्विक्स करके फिर वही सेम पेटेंट प्रोटेक्शन जो है, पेटेंट जो है वो एवरग्रीन होते रहते हैं. सो इस पेटेंट एवरग्रीनिंग के कारण ये जो है, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती है, ये जो जो पुअर नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको मिल नहीं पाती. सो हियर इंडिया प्रिवेंटेड एवरग्रीनिंग सो दैट ये इस इश्यू से ये जो मार्केट एक्सेस है, जो जेनरिक एक्सेस है, ये रोका ना जा सके. Then the second thing, compulsory licensing, that allowed government to authorize the production of patented product during health emergency. So again, pandemic जैसी situation है, health emergency है. So here government can take over the production of patent product. Government is authorized to produce that product to cater to the critical demands. Now, second strategy is about global advocacy, where India championed the Doha Declaration of TRIPS and public health in 2001 that affirmed public health must override commercial interest. तो जो अब यहाँ पे जो इंडिया का जो humanitarian ground है, that is again the issue in encapsulation form is that public health issue, it must override all commercial interest, all the seeking of profits. Then, during the COVID-19 pandemic, India with South Africa, they proposed a TRIPS waiver so that vaccines, therapeutics, and diagnostics can be ensured at affordable rates. So, India's approach to IPR negotiation, it exemplifies developmental pragmatism, that you are going to adapt to global norms, but at the same time, you find out some flexibility so that public health, food security, and technological sovereignty, the critical issues, can be gained access to. Then proceed on to spatial and differential treatment, preserving policy space. So this SDT is the lifeline that allow developing countries to adjust to trade liberalization their own pace. But for India, it is not just a concession, it is an expression of developmental justice. So SDT, it means this differential treatment, it is for poor and developing countries, or उनके लिए they have been given some concession, like they have been given longer time period to implement agreements, and some commitments, some pressing commitments, they have been reduced in intensity. Fair the rich country, they would provide technical assistance and capacity building, and many such flexibilities are provided. So here, this HDD thing, India has key contentions on it. First one is structural vulnerabilities. So despite impressive economic growth, India remains home to largest number of poor globally, that is around 228 million. For second contention, infrastructure gap, that large parts of rural India they still lack access to roads, electricity, and digital infrastructure.
ये भी सही है. फिर ह्यूमन डेवलपमेंट challenges. So India's human development index, the overall measure of development, it is very low. India ranked 134 in 2023, which reflect socio-economic deficit. So here India rejects the idea that GDP size should alone should determine obligations within WTO framework. So ultimately, here this differential treatment, it uh, it is not just any concession or discount. It is about justice. Now, at Geneva MC 12, India led resistance against attempt to curtail SDT, emphasizing that true fairness must consider developmental needs, not just trade competitiveness. So here, the Geneva Ministerial Conference, many rich countries, they they pushed for the reducing or curtailing SDT because they found that this is just a discount, और यहाँ पे जो leniency है या जो concessions दिए गए हैं poor and developing countries को, अब जो rich nations हैं उनको तो market access से, उनको profit से मतलब है. ऐसे में ये इन कंसेशन की वजह से बहुत सारा मार्केट एक्सेस जो है, एक्सप्लॉइटेशन है, जो न्यू फॉर्म ऑफ इम्पेरियलिज्म है, नियो कॉलोनियलिज्म, नियो इम्पेरियलिज्म, वो सब उनका रुक गया है. सो ऐसे में दे आर डेस्परेटली ट्राइंग सो दैट दिस होल थिंग एसडीटी इज एलिमिनेटेड और उनको जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका पूरा मार्केट एक्सेस मिल जाए. बट यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज फ्रॉम ग्लोबल साउथ, they are standing tall against this thing, they are resisting against such attempt, and by defending SDT, India and many countries, they uphold a broader principle that multilateralism must be anchored in solidarity, not uniformity. एंड यहाँ पे इवन जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ समझते हैं कि दे आर सर्टेन थिंग्स सच एज जस्टिस, हेल्थ, critical times. So these are the situations, they must be concessed, they must be discounted, so especially against the profit motives. क्योंकि प्रॉफिट के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बट यू कैनॉट मेक प्रॉफिट ऑन द कॉप्सेस ऑफ पीपल. You cannot kill people and make profit. You cannot commit unjust crime and make profit. So that's the major objection that is levied by, imposed by, or put again by uh, India and many countries of global south. And such objections, they are echoed especially in many multilateral institutions in present times. Then the next strategy of India's WTO negotiation is about South-South cooperation and coalition building. So realizing that number mattered, India has consistently focused on coalition diplomacy. Coalition means groups. So in today's economic world, interconnected world, numbers matter, vote count matter, solidarity matters. So इसलिए India, it started getting into the coalition diplomacy. So major coalition that India has, first G20 on agriculture. Here, India advocated for reduction of developed countries' trade distorting farm subsidies. So the trade distorting farm subsidies that is being talked about here. So developed countries में ये होता है कि the whole lens is the commercialized one. It's like they do not have anything, any semblance of justice in them or any semblance of humanity in them. All they think about is getting profit, getting more profit. So this commercialization of agriculture there. So वहाँ पे हमारे जैसे तो हाल है नहीं. बहुत large pool है, large pool पे technologies हैं, the whole agriculture is mechanized thing, large pool of land. और ये आप समझ सकते हैं, single large farmer हैं, the whole thing is mechanized. So जो produce है वो भी हाई होगा. और उसके बाद जो सब्सिडीज जो है, रिच जो नेशंस हैं with their deep pockets, they provide humongous subsidies to such large farmers. और उन सब्सिडीज की वजह से उनका इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है. सो कंपैरेटिवली जो द फार्मर्स हैं, द एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ,
दे आर एट द रिसीविंग एंड, क्योंकि उनका जो इनपुट कॉस्ट है इट इज़ यूजुअली हाई। वो कैसे आप समझ सकते हैं, उनके पास एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ नहीं है, मैकेनाइजेशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द लैंड इट इज़ मानसून, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इट इज़ मानसून डिपेंडेंट। सो ऐसे में उनका इनपुट कॉस्ट हाई रहता है। फिर अगर यही रिच नेशंस हैं, दे ऑल टॉक अबाउट liberalized trade, globalized economy, open trade, getting market access. So ultimately, they are talking about this thing, that they have provided subsidies which has reduced the input cost, and because the input cost has been reduced, जो उनके farmers हैं उनका produce है, it becomes profitable in international market। और ऐसे में अगर वो दुनिया के बाकी कंट्रीज में अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जाते हैं तो सीक प्रॉफिट, now any such country should not stop it from getting a corner of their markets। और बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फार्मर दे इम्पोज टैरिफ, फिर उसमें उनका अलग ही खेल शुरू हो जाता है। Now, coming back to the topic, the second such coalition is G33, where India advocated for food security flexibilities. And that's how the peace clause in Bali was secured. And third such group, G90, where India represented the interest of least developed countries and African, Caribbean, and Pacific nations. Now, the next such coalition, the Cancun Ministerial, where India, along with Brazil, China, and South Africa, they successfully blocked the EU and US to push for new issues such as investment, competition, government procurement, and यहाँ पे reasons same थे जो Seattle Ministerial के थे, that you cannot push for something that distort the market, that make you more profitable without fulfilling the promises that you made already. And such resistance, it marked a dramatic show of developing world solidarity. Now, strategic importance. So coalition, they amplify India's voice by legitimizing its position as a collective demand and reshaping global perception of WTO. Thus, coalition building is not just tactical but also ideologically aligned with India's vision of multipolar, inclusive global order. ये सब लाइन जो है यूपीएससी मेंस में काम आएगी। Now, the contemporary challenges in India's evolving strategy. So, the major contemporary challenges: first, dispute settlement crisis. So, Donald Trump, he has blocked appointment to the appellate body, and this has crippled the WTO's judicial function. Fear, the rise of plurilateralism. So, rich countries they increasingly prefer coalition of the willing on new issues. So here, plurilateralism means now many countries they are seeking new centers of power, new centers of resistance. So यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट पे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, तो उसके लिए अब वो दे हैव स्टॉप टेकिंग रिकोर्स टू WTO। और वैसे ही WTO हैज़ बिकम डिसफंक्शनल। appellate body जो है, it is the hallmark, the main thing that keeps WTO going, क्योंकि WTO के जो commitments हैं they are binding। इससे पहले GATT में commitment जो है वो binding नहीं थे, अब commitment binding है, तो the authority that ensures that such commitments are fulfilled is the appellate body। अब appellate body के अंदर appointment ही नहीं होगा, ठीक है, तो commitment कौन इंश्योर करेगा? सो इसलिए जो कंट्रीज हैं दे आर सीकिंग settlements out of WTO system, and then new trade environmental linkages. So the issues like carbon tariff and sustainability standard they become new form of protectionism। so ये होता है कि rich countries जो होती है they are imposing carbon tariff, so tariff ही impose करना है, but now they are disguising in form of their poncho, their interest or their likelihood for greener product। सो ऐसे में वो जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज दे आर इम्पोजिंग कार्बन टैरिफ्स। सो उसकी वजह से टैरिफ किसी भी नाम से हो, बट अल्टीमेटली इट एंड अप मेकिंग द एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपेंसिव। नाउ इंडियाज tactical adjustment. So India, it has selectively engaged in such bilateral talks. So
India engages in exploratory talks like digital economy with various nations without binding itself prematurely. Then vocal on trade and development linkage. So India resist green protectionism, जो अभी आपको बताया कि यहाँ पे टैरिफ ही लगाना है उनको ताकि जो दूसरी कंट्री से जो imports आए they will become expensive or expensive होती जो domestic producers हैं they are protected. So this new form of protectionism also known as green protectionism. So India it resists green protectionism and it demands the new issue must consider developmental impacts. Then India is readily pushes for inclusive reform. So India insists that WTO reforms they must address asymmetries, revive the dispute settlement system, and refocus on original developmental mandate. So asymmetries, inequalities, the power inequalities, ये सब जो है they should be addressed. फिर ये तो है ही है appellate body जो वापस start करो and then जो original mandate है WTO का that it would uh, regulate the global trade so that inequalities can be reduced, poverty can be eliminated, and the global development, the global people, they walk on a developmental trajectory. So India, it is reminding WTO that it is your original mandate and you should walk on the promise that you made. So India's approach it reflects pragmatic realism, engaging where necessary, resisting when principled, and always pushing for a WTO that serves as a forum for development oriented globalization. Again, a good line for UPSC mains. Now, finally, India's vision for WTO reform. So, for India, WTO reform is not just a technical necessity, it is a political and moral imperative. Imperative means necessity, it is required, both on political and moral ground. So, key pillars of India's vision first, restore rule based dispute resolution. So, a credible appellate body is essential for fair adjudication. Then revive development agenda. So WTO it should go back to its original mandate for which it was created. Herein, issues like agricultural reforms, spatial and differential treatment, and technology transfer, they must regain central stage. Then third reason, democratize decision making. So LDCs, the least developing countries, they should be given greater voices and smaller economies, poor countries, developing countries, they should be given a say in decision making and decision making should not be monopolized by a few. And the final reason, balance traditional and emerging issue. So here India's vision ensure that digital trade, environmental standards, and labor issue they are negotiated fairly without marginalizing developmental needs. And as of traditional and emerging issue, so the issues that connect with the cyber world and that connect with the green thing, the carbon tariff, the environmental standard, they should not overshadow the key mandate of poverty eradication and development. Finally, India envisions a WTO that works for many, not just a few. A platform where trade contributes to shared prosperity, not deepening divides. So, this is it. Kindly subscribe to the channel and thank you very much.